Les conseils pour la production orale et production écrite. So speaking and for writing, because these are the two active modules. What should you ideally do? Okay, साथ साथ French भी हम कर ही रहे हैं, read करेंगे इसमें, ठीक है? So first one, रौनक lisez s'il vous plaît. Oui. Quand vous faites une production orale ou une production écrite, Production, chef. Production. Production. Oui. Production orale ou une production écrite. Production. Soyez très Ce n'est pas production, c'est production. production. Oui. Soyez très attentif et plutôt concis. Conscient. Faites à Conscient. conscient. Oui. Conscient. Oui. Soyez très attentif et plutôt conscient. Faites ça, effort, concentré. Concentré da surveiller vous-même. Surveiller vous-même de ce que vous parlez ou écrivez. Ok. Ne pensez pas aux autres choses. Aux autres choses. Ok, d'accord. Donc, dans ce point, quand vous faites une production orale ou une production écrite, when you do a production orale ou écrite, soyez très attentif et plutôt conscient. Soyez is like be, imperative form hai. Be very attentive and rather conscious. Okay, conscient, c'est comme have that conscious, level while you're writing or speaking something. So ऐसा नहीं कि ऐसे लिखने में हवा में कुछ लिख दिया and then send कर दिया, ऐसा नहीं करना है. Okay, speaking में भी conscious कैसे रह सकते हो? One of my friends actually used to suggest me. He has a very good level of speaking. So like, when I asked him once, like 2-3 years ago, he suggested me to visualize sentences written in front of me like this, and that as if I would just be reading them out. Okay, so that would help me with my speaking. So that's a good tip to go about it. So you are basically working consciously in that case, okay, without making those errors. Because if you read, okay, passe compose में बोलना है, अब ऐसा तो है नहीं कि the other person will tell you, अच्छा मैंने आपको ये पूछा past में आंसर करो, ऐसा तो नहीं होगा ना. So, but with your teacher, it's going to be like that. Sometimes I'll have to tell you that, okay, this is the situation. You should ideally be employing passive composing here. But now onwards, that should also not be so much needed. तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि if she has asked me कि आपने कल क्या किया, तो obviously ये चीज past में ही बताई जा सकती है. Right? So now onwards, what can you do? You can just keep imagining sentences written in front of you that, okay, if I want to say that I woke up yesterday, so it's a serve verb and it's passive composé. So je, then followed by the reflexive pronoun. इतना लंबा process नहीं, थोड़ा सा time लगेगा इसके साथ ease में आने में, एकदम से नहीं दिखने लग जाएंगे sentences सामने लिखे हुए. But कोशिश करो, train your brain to do that. Basically, that's what I'm trying to tell you. Okay, so what you can do is je me suis. That's the starting का structure, and then réveillé participe passé आ गया. That's the past participle. Je me suis réveillé, and then अब time add होगा. Je me suis réveillé à 7 heures du matin. That is the sentence. Likewise, now this is not a method that you will get at ease with just within a day. It will require at least 3-4 days. But every time you speak something in class, or if you speak something even with yourself, try to visualize those sentences written in front of you. That will really help. Okay. So yeah, then faites un effort concentré de surveiller. Surveiller is to monitor oneself. Surveiller vous-même, that is to monitor yourself. So do a very concentrated effort of monitoring yourself. De ce que vous parlez ou écrivez. As if, just monitor yourself in terms of what you're writing and what you're speaking. And you should know yourself that आपने अब sentence अगर बोल दिया, अगर उसमें error हो गया, तो you should know at least कि इसमें मैंने कर दिया error. You should, like, all of you are at that level wherein you can still, like, spot your little errors ye wale. Okay, so try doing that, and then when you realize that, okay, maine error kar diya, then again come back to that same sentence and try to correct it now. Okay,
Now, ne pensez pas autre chose. इसमें और चीजें कुछ नहीं सोचनी है कि मैंने दूसरे से अच्छा किया है या दूसरे से कम कर रहा हूँ. Don't compare yourself ever with others, okay? Then anything else, when you come for a French class with me or when you're like self studying, उससे पहले एक warm up exercise का 10 या 15 minute window रखा करो. That means that अगर हमारी क्लास मान लो 4:30 पे स्टार्ट होती है, तो आप उससे पहले 15 मिनट लो. When you are just keeping yourself in a French state of mind, just thinking in French or maybe just going through your previous notes, just revising. आप immediately किसी और टास्क से स्विच करके फ्रेंच में आते हो ना, तो वो स्विच करना मुश्किल लगता है. किसी भी दिन ये चीज एक्सरसाइज ट्राई करना, you'll be more confident in class while speaking also. Okay? एंड इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, कई बार ये भी होता है, मैंने जैसे आज भी 10 मिनट आगे की, तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. डोंट थिंक कि अच्छा टीचर लेट आ रही है. थिंक दैट मेरी क्लास 4:30 पे ही स्टार्ट है, बट मैंने अभी अपने आप को इस टाइम पे वो वार्म अप एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करना. ओके. ऑल्टरनेट डेज पे भी व्हेन यू डोंट हैव द क्लास 4:30 वाली, जैसे मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है ये वाली, तो आप लोग क्या करें, जो वो वाला 4:30 to 5:30 का स्लॉट है, डोंट थिंक कि इट्स एन ऑफ डे फॉर फ्रेंच क्लास. थिंक दैट दिस इज अ सेल्फ स्टडी डे फॉर फ्रेंच. ओके. सो दैट रियली हेल्प्स यू. तो थोड़ा सा चीजों को अपना अप्रोच अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे कई चीजों में, यू विल सी योर ग्राफ गोइंग अप वेरी क्विकली, मच मोर क्विकली. Then you have this second point here. Can you please just read this, Gunur? Oui, madame. On n'a pas besoin du verbe être et ses différentes formes dans chaque phrase. Oui. Les phrases sont très bien possibles sans l'utilisation du verbe être. All right. Fine. So, on n'a pas besoin du verbe être. That means that, see, students have a tendency to make it je suis voyager or je suis regardez. I'll just write these sentences here. Je suis voyager or je suis regardez, etc. They're not sentences to be made this way because you know that in French, simple present and present continuous are just the same, right? So you do not use it this way. Je regarde, je voyage. OK? On n'a pas besoin du verbe être et ses différentes formes dans chaque phrase. OK? So drop this habit in case you have it. Then, les phrases sont très bien possibles sans utilisation du verbe être. Without using the verbe être aussi, ça marche. OK? Voilà. So these I'm putting in red because these are wrong sentences. Voilà, après ça, la troisième phrase, vous avez cela. Mandy, please, s'il vous plaît. Ok. Tout d'abord, décidez avec le contexte que vous devez utiliser le passé composé ou une construction. 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 Sion. Construction. Wait, look. Construction. Construction. Try now. Construction. That's Construction. Mhm. Je vous insiste de revoir, réviser et pratiquer rigoureusement. 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 Mhm. C'est du sujet de grammaire car l'utilisation de ces deux est complètement indépendante. Ne les mélangez pas. Okay. Rigoureusement, l'utilisation. Okay. You've got to make your tongue used to also reading out loud. ये एक exercise किया करो. Just even if you take like a small text, random कोई भी text उठा लो, net से उठा लो, कोई book है आपके पास मान लो, random कोई भी French का text, and read it out loud. हमें स्कूल में भी बोलते थे English के लिए reading out loud, right? So that is an exercise which makes us more comfortable with speaking out language and in terms of not just the pronunciation, but also speaking naturally when you're not looking at, just speaking all by your own. Yeah, rigoureusement, c'est the choses, c'est the sujet. Okay.
Tout d'abord, décidez avec le contexte que vous devez utiliser le passé composé ou une construction passive. So you have to decide between whether you have to use passé composé or whether you have to use une construction passive. Because इनका जो फॉर्मेशन होता है देखने में थोड़ा सा सिमिलर लगता है. अभी पैसिव आपने नहीं किया so कोई बात नहीं. This is more generally for B1 students that I discussed with them also. So in this construction passive is when the house was constructed in 1988, something like that. Okay, was constructed. A été construite. So देखने में वो वैसा ही लगता है कि जैसे passé composé हो, but you have to pay more attention to it. So yeah, je vous insiste de revoir, réviser et de pratiquer rigoureusement. Rigoureusement means rigorously, very rigorously. C'est deux sujets de grammaire. I suggest you to study these in detail properly, car l'utilisation de ces deux est complètement indépendante. The use of these two is completely independent of each other. Okay, and both of them are very important as far as your TEF Canada is concerned. Okay, ne les mélangez pas, don't mix them up. Mélanger is to mix. Okay, now the fourth one, Ronak, lisez. Avant de commencer une nouvelle production orale ou production écrite, revoyez les écrits. Revoyez les erreurs et les corrections de vos anciennes productions ou ne pas répéter les mêmes erreurs. Très bien. Better improvement this time in pronunciation. Avant de commencer une nouvelle production orale ou production écrite, revoyez. Revoyez, c'est le verbe revoir. Revoir is like to see again. Okay. So do see again the verbs, les erreurs, all the fautes de grammaire, fautes de structure that you have done before, et les corrections, and the corrections that I have given you, de vos anciennes productions. That means your spoken also. मैं उसकी भी corrections देती हूँ आपको पता ही है, and written में भी जो भी corrections आपको मिलती हैं homework में, please make sure you do read them, go through them in detail, because that will help you to filter out those mistakes, filter away those mistakes, and then to not repeat the same errors. कुछ एक consistent errors होते हैं ना हर एक की writing में, हर एक की speaking में, you can actually get rid of them. So that can only be done from your end, because when you have been given those that feedback, so obviously you need to filter that out. Otherwise आप next day भी देखोगे कि same errors repeat हो रहे हैं and productivity नहीं हो रही है. Graph तभी आप जाएगा जब आप ये वाला एक step का effort करेंगे. Right? Now, fifth one, Gunu, lisez. Les articles sont hyper importants. La notion de singulier et pluriel est également important. So like in English, you don't have you don't give so much importance to articles and like definite indefinite with the negative guy. तो एक आध जगह चल जाता है ना. And plus with most of the nouns ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हमें द लगाना ही है हर जगह पे. French में ça c'est hyper important. Hyper important, c'est comme super super important. Okay, so you can't do, आपको पता ही होगा already that you can't do without putting articles, at least if it has to be either a definite article or an indefinite article or a partitive article, and they're always supposed to be put with a noun. Okay, also one way to identify a noun in a sentence is that if it is being followed by an article, right? Now, la notion de singulier et pluriel aussi. Okay, la notion de masculin, féminin, singulier et pluriel, c'est aussi extrêmement très important. Okay, so you absolutely have to know whether to put le, whether to put la with something, l'apostrophe, etc. Okay, and then you have différencier les verbes et les noms. This one, okay, Madi, please read. Okay, ma'am. Différencier les verbes et les noms. Par exemple, un travail et un nom, travailler et un verbe, verbe, du couple, un travail, Du coup, un travail n'existe pas. Oui, d'accord. Un travail n'existe pas. And also this is not nom, it's non. Nasal sound आएगी, non.
Okay. Yeah, so please remember to differentiate between verbs and nouns, because sometimes a verb might look like a noun, it might have a slightly different spelling, but you might think that this is the same. Examples जैसे कि ये travailler हो गया, या फिर jouer. Jouer is a, sorry, jouer, O-U-E-R, jouer is a, what is it? Is it a noun or a verb? It's a verb. Verb. Say un verb, to play. But then you have joueur. देखने में सेम लग रहा है? एकदम से अगर हम सारे अल्फाबेट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें लगेगा शायद ये यही है, तो जुए बोलने की टेंडेंसी होती है कई स्टूडेंट्स की, बट दिस इज जुअर. जुअर मींस प्लेयर, masculine form. Okay. O-U-E-U-S-E, joueurs. Joueurs, what is joueurs? And player for feminine. The feminine form for a player. Okay, so French में ऐसे बहुत से words होते हैं wherein you need to pay attention to these tips. Okay, jouer, joueur. Okay, and then there is also this. How do you pronounce? Je. Je. Je means? Okay, je. And what is the plural form of it? Games कैसे बोलेंगे? And zoo. Je. Avec X. Avec X. Okay, so another. इसमें बहुत common error है ये वाला. Qu'est-ce que c'est? Comment prononcer ça? Lisez ça, c'est bon. Étudier. Étudier, right? Étudier, ça veut dire to? Study. Verb or a Study. noun? Verb. 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 Give me its conjugation. J'étudie. Répétez. J'étudie. J'étudie. Étudier. Étudie. Tu étudies. Right. Then, after that? Il étudie. étudie. Nous. Étudions. Nous étudions, oui. Vous. Étudier. Étudier. Pardon, avec Z. Et il ou elle. Étudie. So here in the present tense, when students are speaking a sentence, they tend to say j'étudie. It's not that. It's j'étudie. Okay. Now, also you have another word. Say. Les études. Les études. What does that mean? Studies as a noun. For example, je paie. Pardon. Je fais mes études. Je fais mes études de français. My studies of French. Mes études. So I'm not saying je mes étudie. Je fais mes études. Études नहीं है ये. इसमें ई कहीं भी नहीं है. Right? Are these clear? Okay, so this is in noun form here. All right. And if I wanted to say j'étudie le français. That's I am studying French or I study French. J'étudie le français. That is a verb form. So you've got to be very careful about all of these forms. Ye un travail is a noun form. Un travail as in work as a noun. Whereas travailler is the verb, and when you conjugate it, it does not become un travail. That will be je travaille, tu travailles, il elle on travaille, nous travaillons, vous travaillez, il elle travaille. But in a noun form, there's only one L. Right? Fine. Now, try to every time when you come across these types of verbs and also similar forms of nouns with them, please try to make a conscious effort that चाहे उनको अलग से note कर लो और उनको study करो properly कि इसकी spelling क्या है. Language is French, especially in terms of spellings, is also about learning their every single alphabet that is involved, and also not interchanging places. For example, English में क्या होता है ना कि students tend to write REC. Okay, wait. I'm going to give you two words. Okay, tell me which is the right spelling. Which is the right spelling? First one. First one.
What is the right spelling? Second. Second one. Okay. Adi? First, ma'am. First one. First one. EI. The first one. Okay. Receive is the first spelling. Okay. So here you have this is wrong and this is right. अब हुआ क्या? सिर्फ एक अल्फाबेट की प्लेसमेंट आपने इंटरचेंज कर दी उसकी वजह से. वैसे ही अब फ्रेंच में बताएं कौन सा सही है? First. First one. Madhi? First, ma'am. First one. 13. 13 is 13. Yes. Students also tend to write this, but this is not right. है ना? हो क्या रहा है? सिर्फ एक अल्फाबेट की प्लेसमेंट आपने जो वो करी उससे गलत प्लेस करी, है ना? तो ये छोटी छोटी सी डिटेल्स देखने वाली होती हैं लैंग्वेज में, है ना? ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. यू हैव द 7th वन. की वालीर मदी प्लीज. Okay, ma'am. Il y a une grande différence entre et est un connecteur et la connecteur connecteur et la conjugaison oui du verbe être avec il, on. Right. Il y a une grande différence entre et. This a represents and. Okay. Voila. And. Okay. Whereas the other one is être ka conjugation, which comes with il, elle, on. You know that, right? So always consciously use them. Okay. Then 8th one, Ronald, please. Remarquez attentivement la différence entre la prononciation. Différence entre la prononciation. देखो अभी बीच में accent आ रहा है ना यहाँ पे a pronunciations. Différence. Oui. Différence entre la prononciation et les pronoms complément objet direct et complément objet indirect. Oui. जब vous parlez n'est pas correct car ici la sujet je vous ici c'est un pronom complément objet indirect. Je vous parle c'est la phrase correcte donc la verbe ça conjugue Oui. Conjugue avec la sujet, pas avec les pronoms. So if I say, for example, nous, vous, and इसके साथ मुझे conjugate करना verb connaître. What should be the conjugation here? Connexion. Sorry? Connexion. Connexion क्यों? Connexion क्यों? So. Yes, Madhi? Because subject is nous. Yeah, that's fine. But connexion क्यों? Present tense में कर रहे हैं अभी. Oh, connaissons. Right? So nous vous connaissons. Why? Because we are conjugating according to nous and not according to vous. Because students see कि अच्छा वो आ गया वो के साथ EZ लगता है लगा देंगे EZ. Wrong. Okay? Or else if you had vous, nous, and now again you have the same verb. So connaître, nous vous. Or चलो नहीं इस बार verb अलग लो. Respecter. Tell me. Vous respectez. Vous nous respectez. हाँ जी, vous nous respectez. That means आप हमें respect करते हो. ये था कि हम आपको जानते हैं. Okay, so it has to be according to the subject and according to the direct object pronoun or the indirect object pronoun. Got it? Voilà. Next one, Gunur, please. La structure négative au présent
Structure. Structure, négatif au présent, c'est ne plus verbe. Say. Okay, say, मैं इसको inverted commas में डाल देती हूँ, so it will be better to understand like this. Now, tell me. C'est ne plus verbe, conjugué plus pas. D'accord. So, if you have to put negation in the present tense, it has to be ne plus verb conjugation plus pas. Par exemple, je, यहाँ पे n apostrophe भी डाल लेते हैं, because if it is starting with a vowel, right? So, je ne sais pas. Je ne sais pas. And otherwise, another example, je n'aime pas. Je ne aime pas नहीं होगा अब ये je n'aime pas बन जाएगा. ऐसा ही है? Got it? Yes. Now, coming on to reproduction. Deux minimum fois, हाँ, ठीक है, deux fois minimum. Deux fois minimum. Yes. This one I'm going to ask Mandeep to read. Allez-y. Réaliser ou réécouter vos productions deux fois Production. deux fois minimum avec l'intention de faire l'autocorrection en restant super conscient avant de les considérer Oui. comme les produits final. Oui, produit final. D'accord. Alors, ici, vous avez quoi? Relisez. Relisez as in reread. Et réécouter ou réécouter, c'est comme re-listen. Listen again. OK? Vos productions. OK? Listen to your production as in oral and écrite both. OK? Listen to them 2 times minimum, 2 fois minimum, avec l'intention de faire l'autocorrection, with the intention of doing your autocorrection. You should be able to correct your own errors. It's not always the teacher's responsibility, because if you do not recognize your own errors, then final में चाहे आप exam में कर रहे हैं या even real life में, how will you recognize your errors? So you should train your brain to identify your own errors now onwards. En restant super conscient. So while staying super duper conscious of what you're presenting, avant de les considérer comme les produits finaux. So students generally tend to think कि ये बस हो गया final, अब मुझे ना इसको reread करना है, ना इसको re-listen करना है, and that's it, अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया की. ऐसा अगर आपका एक्चुअल मोटिव है कि लैंग्वेज सीखनी है, तो आप टीचर पे ना डाल के अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें. Okay? Now, coming on to the next one. This one is pour or a or the. These prepositions are followed by verb à l'infinitif. Pour regarder, okay? Je vais au cinéma pour regarder un film. Okay? J'apprends à cuisiner. J'apprends à cuisiner as in I'm learning to cook. Okay? So, j'apprends à cuisiner. Okay? Tu me dis de comprendre la situation. Tu me dis pardon, on a encore. Tu me dis de comprendre, de avec comprendre, ok, la situation. You are telling me to understand the situation. Tu me dis de comprendre la situation. Okay, so verb with verb in its full form. Verb à l'infinitif is its full form. Okay, I'm going to complete all of these on my own. Okay, quand un verbe se termine avec ENT, la prononciation de est not on. Students tend to pronounce développons, regardons, chantons when there is an ENT, जब il conjugation होती है. Okay? Avec il ou elle, ça veut dire il, elle pluriel. Quand un verbe se termine, when the verb is ending with ENT, this ENT में NT remains silent, and so the ending is and not You don't have to say Okay? So it is il regarde, il parle. Donc, vous allez dire quoi? Il parle with not with It's not il parlons. Right? Is this understood to everyone? Let me know. Oui. Okay, fine. Further, voyez le sujet et le verbe et conjuguer le verbe d'après le sujet.
So again, subject को directly correctly identify करना है सबसे पहले, and then look at the verb, conjugate the verb according to the subject. Okay. Then ne conjuguez pas, ne conjuguez jamais un verbe selon un adjectif possessif. Oh yes, this one students tend to think that okay, if I say ton père, and then you have the verb aller au cinéma. Your father is going to cinema. So there are students who tend to think that this should be ton père VAS va. क्या आंसर होना चाहिए? VAS होना चाहिए या फिर VA होना चाहिए इसमें? Which one is the right one? VA. Yes, V- because yeah, sorry, this is green, okay? Because this is the right form. This is the wrong one. So va, ton père va au cinéma with this form, not the other one, because ton père is the entire subject. It's not ton. Students tend to think कि ton is the subject, कि पहला word है बस वही subject होगा और उसके according अभी tu हो गया. ऐसा नहीं होता है. It has to be the correct subject form to identify. So, identifiez le sujet dans la phrase correctement. Please identify the subject in your sentence correctly. Only then you'll be able to put the right verb form. है ना? Then, entraînez votre cerveau à identifier le temps verbal dans chaque phrase. Now, onwards, you all are at a good stage to train your brain. Cerveau is brain. Entraîner is to train, okay? Train your brain to identify the tense, the verbal tense in every single sentence. When you read something, when you listen to something, इसमें, if I say je vais aller, which tense is it? Je vais aller? future proche. Futur proche, exactement. If I say je suis allé? Passé composé. Passé composé. Il a regardé? Passé composé. C'est composé. Il regardait? Present. Présente. Il Présent. regardait. Il regardait. C'est pas imparfait. C'est l'imparfait. Parce qu'au présent, c'est il regarde. Mais il regardait. AIT. Il regardait. You see, this is present, this is imperfect. लिखी हुई form में भी और बोलने वाली form, like listening में भी, please train your brain now onwards to identify the tense. Sentence को consciously read करें और उसमें sentence में जो little endings होती हैं, okay, या जो छोटे उसमें वो जो ये वाले like identify एक word के अंदर little word which will give you also the infinitive verb कि ये इस verb से आया है and plus the endings identify करने से you will get to know, or if there is the usage of aller, there is the usage conjugation of être or avoir in which form, it will help you identify the tense in the sentence and it's very important. Okay. Then coming on to the last one. Finalement, ayez une patience et une constance infinie pendant votre apprentissage de la langue. You've got to have a lot of patience and a lot of consistency. Constance is consistency during your preparation phase or learning phase of the language, because obviously you know that by now you are at that stage to realize it enough कि French is not something to be learned overnight. ऐसा नहीं होता. It takes time. Okay, but yes, what you need to do is oui, moi j'ai ajouté que, ok, je sais que c'est un défi. Défi means a challenge. So I absolutely know this is a challenge. Mais suivre les conseils. Suivre यहाँ पे एक verb की तरह नहीं, as a noun use हुआ है, but following the guidance. Suivre les conseils, which I'm providing you, avec suffisamment de sincérité, vous mènera vers votre objectif. So, following the guidance with enough sincerity will take you to your objective. Right? Donc, ne vous comparez jamais avec la performance des autres. Don't ever compare yourself with others' performance. C'est ça.